accordingly. The first is that extend their concept beyond integers and define rational and irrational numbers. Distinguish rational numbers from natural numbers, whole numbers and the integers. Compute n numbers of rational numbers between any two given rational numbers. Diagrammatically represent irrational numbers on the number line. Formulate various ways of rationalization of irrational numbers. Apply the laws of exponents as per the requirements. Appraise the use of number system in higher level of study. So these are the important points while we are trying to learn the system of numbers. So as we were discussing the rational number, so this is given that a number R is called a rational number if it can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and the denominator Q not equal to 0. For example, minus 75 can be written in the form minus 75 by 1, which is in the form of P by Q, where P is equal to minus 75 and Q equals 1. So this can be assumed as the rational number. We know that the rational numbers do not have a unique representation in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. For example, 1 by 2 equals 2 by 4 equals 10 by 20 equals 25 by 30 equals 47 by 94 and so on. These all are the equivalent rational numbers because the ratios of all the terms will be same. So we can say these all the numbers are rational number and they are equivalent to each other. Now here are the classification of numbers. On the display you can see once we are able to define the types of numbers, let us try to answer these questions. The first, is every whole number a natural number? Is every integer a rational number? Is every natural number a whole number? Is every whole number an integer? Is every rational number a natural number? Is every rational number a whole number? Is every rational number an integer? Is every whole number a rational number? So these are the points and we have to answer. So I think you should revise the previous lecture series, and I have already described the classification of the numbers, and here it is again. You can see on the display, here is the classification of numbers. The first number and the two parts are categorized. The first is real numbers and the second is imaginary numbers. We are not discussing imaginary numbers here because this is the part of complex number, and we will discuss later on this topic. So here the real numbers have the important types. The first is rational numbers and second is irrational numbers. In rational numbers, fractions, integers, negative numbers, whole numbers, zero and natural numbers are the important points. So after the the revision of these all the points, you can easily answer all the above questions. Now you can see, is it difficult to answer these questions easily? Look at the table done below. जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बॉक्स के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया था. जो फर्स्ट बॉक्स था वो रेशनल नंबर के फॉर्म में था और जो सेकंड बॉक्स था वो इरेशनल के फॉर्म में था. और रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का सेट था. मैंने बताया भी था कि इसमें कौन किसका सबसेट होगा और कौन इरेशनल होगा. तो आप देख सकते हो. अभी
हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? आंसर, देयर आर इन्फिनेटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो आपके पास कोई नंबर 2 है और फिर दूसरा नंबर 4 है, तो 2 और 4 के बीच में अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। इटसेल्फ 3 जो है वो रेशनल नंबर है। फिर अगर हम लोग इसका एवरेज निकाल लें तो 2 + 4/2 जो कि 3 आता है, फिर 2 + 3/2, फिर जो गिवन नंबर आता है उसका भी अगर सिंपली आप एवरेज के फॉर्म में भी निकालते चले जाएं, इसको फाइंड आउट करते चले जाएं, तो आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक रेशनल और सेकंड इरेशनल नंबर के बीच में भी कई रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर √2 एक इरेशनल नंबर है और अगर जो 4 है वो एक रेशनल नंबर है, तो दिख रहा है हम लोगों को कि √2 और 4 के बीच में जो 3 है वो रेशनल नंबर है। 3.2, 3.5, 3.7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो रेशनल नंबर्स होंगे, और उसके बीच में कई इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स एंड मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, वी कैन ऐड ए एंड बी एंड डिवाइड द सम बाई 2, दैट इज a + b/2 लाइज बिटवीन ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर 3/2, 5/4, 11/8, 13/8, 7/4 एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रेशियोज होंगे जो हम लोग 1 और 2 के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग एवरेज के फॉर्म में भी अगर इसको फाइंड आउट करते चले जाएं, उसको इवेलुएट करते चले जाएं, तो ऐसे इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स हम लोग को मिलेंगे।